back to my YouTube channel. Let's start with the second video from the lesson number 2, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anish Chan. Yes, dear student, this is a story about children. This is a story about the lost childhood of those children. Dear student, before talking about the second video today, let me tell you something about our previous video, that what exactly we came to know in that and what was the issue mentioned in our first video. Anish Chan has brought such a pathetic issue of that strata of the society and that section of the society who are deprived of very basic amenities of life. Every well-to-do family enjoyed every facilities like good education, good shelter, and so many other things are there. But this section is deprived of these opportunities. Let me tell you that we started our lesson with the Sahib, how he said that sometime I find a rupee in the garbage dump. Narrator said that I every day met this man in my neighborhood scrounging something in the garbage dumps. He came from Bangladesh in 1971. Although he didn't know anything about their home, but his mother used to tell him that we came from there because our home has swept away by many storms and floods. That's why they are here in search of good life, in search of bright future, in search of God, in search of money. That's where they are here, where they are living today. One day when narrator asked him, why did you do this? He said that I have nothing to do. Narrator said that why did you not go to school? He said that there is no school at all. But half jokingly, narrator said that if I started then, he said with a broad smile that yes, I will come. After some days, narrator met with Sahib. Sahib asked her that is your school ready? She felt embarrassed to hear these words from the Sahib. It shows that how they were deprived of educational opportunity. They were the boys who roam in the street barefoot, right? They roam in the street with the army of barefoot boys who appear like a morning bird in the morning and disappear till noon. One day when I asked them not wearing the chappal, they said that it is not lack of money. It is our tradition to stay barefoot. Is it just the excuse to explain the perpetual state of poverty or to hide their poverty? To conceal their poverty? I think this is just the excuse. Afterward, narrator told a story about a young man who used to go to school and there was a temple and where his father was a priest. Every day when he used to go to school, he stopped in front of the temple to make a prayer to have a pair of shoes. Although it was granted, here narrator said that after 30 years when I visited this place again, it was drawn and it was in the state of desolations. Barbadi ke gagar pe tha. Right? In the backyard there lived a new priest. There were red and white plastic chairs. A young boy came pantingly who had put on grey uniform, socks and shoes, threw his school bag at the folding bed, which shows that there are well-to-do people who enjoy the every basic facilities, opportunities. And here narrator associate and relate this story with those of rag picker who remained shoeless. Yes, dear student, now we are going to Delhi, metaphorically out of their reach, still very close to Delhi. We are going to see their economic status first here, right? You will see the structure of mud, devoid of sewage, drainage. You will see the survival in Simapuri means garbage collection. How? You all stay with me till the end of this video to know more than this. My acquaintance with the barefoot breakfasters lead me to Simapuri. नंगे पांव वाले इन कावड़ियों के साथ, रैक पिकर्स के साथ मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी ले जाती है. ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली.
यह स्थान दिल्ली से बाह्य क्षेत्र में स्थित है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, वास्तविक रूप से यह दिल्ली से बहुत दूर है। दोज हु लिव हियर, कि जो वहां रहते हैं, आर स्क्वेटर्स केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, की वह 1971 में बांग्लादेश से आकर यहाँ गलत तरीके से बस गए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डनेस, सीमापुरी उस समय एक उजाड़ स्थान था, उजाड़ जगह थी। इट स्टिल इज, और आज भी उजाड़ी है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु आज ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, राइट, स्ट्रक्चर ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. See, अब यहां पर मिट्टी के स्ट्रक्चर, मिट्टी के बने मकानों में जिनकी छतें तरपाल और टिन की है, 10,000 पीपल्स आर लिविंग हियर, 10,000 गार्बेज पिकर्स आर लिविंग हियर, डिवॉइड ऑफ, ना मल व्यवस्था, ना नालियों की व्यवस्था, ना ही पीने के पानी की प्रॉपर फैसिलिटीज है। They have been lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration card that get their names on voter list and enable them to buy grain. ये यहाँ पर 30 साल से भी अधिक समयों से रह रहे हैं, ना पहचान पत्र है, ना परमिट है, परंतु उनके पास राशन कार्ड है, जिसके कारण उनके नाम वोटरों की सूची में है और वे अनाज खरीदने के योग्य बन गए हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, राइट, जीवित रहने के लिए पहचान की उपेक्षा भोजन की अधिक महत्वता है, राइट, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आइडेंटिटी। इफ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sari when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. फटी पुरानी साड़ियां पहने हुए एक सित्री के ग्रुप से मैंने पूछा कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों वाले सुंदर देश को क्यों छोड़ा। सो वेरी स्मार्टली दे आंसर कि यदि हम दिन के अंत तक अपने परिवारों को भोजन करा सके और भूखे और पीड़ादायक पेटों के बिना सो सके तो हम यहाँ पर रहना चाहेंगे, ना कि उन खेतों में जो हमें कुछ भी नहीं दे सकते। Wherever they find food, they pitch their tent that become transit home. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in सीमापुरी means rag picking. जहां पर भी उन्हें भोजन प्राप्त होता है वे अपने तंबू वहीं लगा देते हैं और वे उनके ट्रांजिट अस्थाई घर बन जाते हैं। बच्चे भी वहीं पैदा होते हैं, जीविका में भागीदार बन जाते हैं। और सीमापुरी में जीविका का अर्थ है, राइट, रैग पिकिंग, कबाड़ीपन। थ्रू द years it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, right? A roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. समयों के साथ इन्होंने ललित कला में महारत प्राप्त कर ली है। कूड़ा करकट उनके लिए एक सोना है। यही नहीं, उनके लिए दैनिक रोटी है, उनके सिर के ऊपर छत है, चाहे वो टपकती हुई ही क्यों ना हो। बट फॉर द चिल्ड्रन, परंतु बच्चे के लिए यह उससे भी अधिक है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। इवन 10 रूपी नोट, यहाँ तक कि 10 का भी। साहिब सेज, हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको कचरे के ढेर में सिल्वर का कॉइन मिलता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, आप उसको ढूंढना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहां और अधिक मिलने की उम्मीद होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, की ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए उनके माता पिता की उपेक्षा कचरे का अलग ही मतलब था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, कि बच्चों के लिए यह जो कचरा है ये आश्चर्य में लिपटा हुआ कुछ मैजिकल थिंग्स है। बट फॉर द एल्डर इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, परंतु बड़ों के लिए यह एक जीने का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब, कि एक सर्दियों की सुबह मैं साहिब को देखता हूं। वेयर
स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब कि मैं अपने पड़ोस की क्लब के जंगले के पीछे वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट कि वो दो युवकों को जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे प्लेइंग टेनिस कि उनको टेनिस खेलते हुए देख रहा है। आई लाइक द गेम ही हम्स वो बड़बड़ाता है कि मुझे ये गेम अच्छी लगती है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस ही वॉज हैप्पी एंड ही वॉज कंटेंटेड वो पीछे से देखने में ही संतुष्ट है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड कि जब वहां कोई नहीं होता है तो मैं अंदर जाता हूं। वो एडमिट करता है। द गेट कीपर इज लेट मी यूज द स्विंग जो गेट कीपर है वो मुझे झूला यूज करने देता है। साहिब हु इज बियरिंग टेनिस शूज साहिब ने भी टेनिस के शूज पहने हुए दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स वे उसके बेरंग कमीज और निकर के साथ बड़े विचित्र लगते हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation, right? स्पष्टीकरण के रूप में वो कहता है कि वो किसी व्यक्ति ने मुझे दिए थे। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ये जूते किसी अमीर ज़ादे द्वारा फेंके हुए थे जिसने शायद एक जूते में छेद होने की वजह से इसे पहनने से इनकार कर दिया था। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट एक ऐसे आदमी के लिए जो नंगे पांव चलता है इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू कि उसके लिए होल युक्त जूता भी एक ऐसा सपना है जो सच हो गया हो। बट द गेम ही इज वॉचिंग परंतु जिस गेम को वो देख रहा है सो इंटेंटली इतने एकाग्र मन के साथ तल्लीनता के साथ इट इज आउट ऑफ हिज रीच वो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ इस सुबह साहिब दूध के बूथ की ओर जा रहा है। इन हिज हैंड इज स्टील कनस्तर उसके हाथ में स्टील का कनस्तर है। आई एम नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस दूर संकेत करते हुए इशारा करते हुए कहता है कि अब मैं सड़क के साथ बने चाय के एक स्टॉल में उस ढाबे में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज मुझे 800 रुपीज दिए जाते हैं एंड ऑल माई मील्स और मेरा भोजन दिया जाता है सारा। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क्ड मैंने पूछा कि आपको ये काम पसंद है। हिज फेस उसका चेहरा आई सी मैं देखता हूँ मैं देखती हूँ हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक राइट ही लॉस्ट दैट लिबर्टी विच ही हैड जो इसके पास हुआ करती थी। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. Right? स्टील का जो ये कनस्टर है उसको अपने प्लास्टिक बैग की उपेक्षा बहुत भारी लगता है जिसको वो अपने कंधों के ऊपर बड़े आराम से उठा लिया करता था। The bag was his. Actually बैग उसका अपना था। The canister belongs to the man who owns the tea shop. और ये कनस्तर उस आदमी का है जिसकी ये चाय की दुकान है स्टॉल है शॉप है। राइट साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर साहिब अब अपनी इच्छा का और अपनी आज़ादी का मालिक नहीं रहा। इनफैक्ट वह स्वयं अपना स्वामी नहीं रहा। Let's discuss some questions from the lesson. What does it mean that metaphorically Delhi is mile away from them? See, the answer to this question is the Delhi is a place known for its well-to-do living standard and known for the education opportunity, medical facilities, good shelter and so many other things. But these are the people who are deprived of, these are the people who can't afford all these things. That's why it has been called that it is out of their reach. That's why it has been called metaphorically miles away from them. How the rag pickers are living here at Simapuri today. In 1971, when they came from Bangladesh, it was in a wilderness, still it is, but no longer empty. 10,000 rag pickers are living here in structure of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage and running water. Right? They are living here without identity, without permit, but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grain. What did the group of women in tattered saris say when narrator asked them to stay here? She said,
If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain. What is the source of survival at Simapuri? Survival at Simapuri means to collect the garbage. Why did Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club? Answer of this question is that Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis. The game which he was watching is out of his reach. What was dream come true in this lesson? Answer of this question is very easy. Sahib has put on discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because a hole in one of them, but does not bother him because one who has walked barefoot, even shoe with a hole, is a dream come true. Why did Sahib not happy working at the tea stall? Answer to this question is again very easy. Initially he said that I'm paid 800 rupees and all my meals. But when narrator asked him, are you like this job? Right? Do you like this job? Right? His face, she could see, has lost the carefree look. The stain canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. Right? The bag was his. Right? He was a master of his own will. The canister belongs to the man who owns the tea shop. So Sahib is no longer his own master. That's why he lost his freedom. And that was the reason that he was not happy working at the tea stall.